वेलकम फ्रेंड्स देखो ए वीडियो रे आमे चारटी सब्जेक्ट रु टोटल 25 टी 100 टी क्वेश्चन करबा ठीक अछि सब सब्जेक्ट रो आमे सब सब्जेक्ट रु प्रति 5 टी टॉपिक लेखा नवाला 5 टी क्वेश्चन जेमति कि एटी तमरो ओडिया रहिछि ओडिया रो आमे संधि रु 5 टी क्वेश्चन समास रु 5 टी क्वेश्चन एई परि आमे इंपोर्टेंट टॉपिक रु 5 टी टॉपिक रु 5 टी क्वेश्चन नबा फर्स्ट क्वेश्चन देखि पारबो एटी तो तमरो फुल मॉक टेस्ट रहइबो तम निश्चित लास्ट चे तमरो फुल स्कोर ता अटेंड करिकि जहाँ तुम स्कोर रोचे से तुम कमेंट सेक्शन में लिखिक जी ठीक अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन रही तुम अत्यावश्यक शब्द रे क्यों प्रकार संधि होती ऑप्शन रही तुम स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि और जन संधि सो तुम कौन करेक्ट आंसर हम कहि परबो जब मैं एक्सप्लेन करबा जी देख एठी तुम कौन होईची अत्यावश्यक संधि विच्छेद कले कौन हम अति युक्त आवश्यक ठीक अच्छे मुझे लिखुनी यार ओडिया अतियुक्त आवश्यक जेहेतु तुम टी माने तुम इ स्वर वर्ण प्लस एटी तुम अत्यावश्यक अ ठीक अच्छे आ तो दुईटा जगह तुम स्वर वर्ण रही तुम यहाँ तुम ऑप्शन ए स्वर संधि ठीक अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सज्जन शब्द सठिक संधि विच्छेद केउटी ऑप्शन ए बी सी ना डी तो करेक्ट आंसर ये तुम देखिपर ऑप्शन ए हम तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख निम्नोक्त मध्य विसर्ग संधिर उदाहरण केउटी मनोरम हिमालय देवेंद्र राजश्री एथि तुम विसर्ग संधिर उदाहरण कौन तो विसर्ग संधिर तुम जानथि केमी तुम होता है सो आम विसर्ग संधि जिते तुम विसर्ग सहित स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण संधि हेले से आम विसर्ग संधि कही तो ये तुम देखिपर जो तुम मनोरम रही मनोरम कौन होता है तुम मन युक्त होता है विसर्ग लगी है युक्त अ होता है सो ये तुम विसर्ग आसला से विसर्ग तुम स्वर वर्ण सहित जड़ित ये तुम मनोरम है गोटे विसर्ग संधि उदाहरण ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए ये पचारि निराकार सठिक संधि विच्छेद कौन हम निराकार सठिक संधि विच्छेद कह ऑप्शन ए बी सी ना डी करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन ए नियुक्त आकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नोक्त क्यों जोड़ी संधि विच्छेद भूल भूल संधि विच्छेद कह रही महोत्सव देवालय गिरीश और नरेश्वर संधि विच्छेद कौटा तुम सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नोक्त मध्य विसर्ग संधिर उदाहरण केउटी मनोरम हिमालय देवेंद्र और राजश्री एमध्य तुम विसर्ग संधि केते होता है जिते तुम गोटे विसर्ग तुम विसर्ग सहित स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्ण संधि हेल्ले आम विसर्ग संधि कही था तो ये तुम देखिपर मनोरम जो रही मनोरम कौन होता है संधि कले आम मनयुक्त कौन रम नयुक्त र मिसिक तुम ओकार फर्मेशन करते और तुम मनोरम होता है तो ये तुम विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण फर्मेशन होगी तुम विसर्ग संधि फर्मेशन होती से तुम करेक्ट आंसर है मनोरम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देख निराकार सठिक संधि विच्छेद पचार सो नियुक्त आकार निर्युक्त आकार नियुक्त राकार ना नियुक्त कार करेक्ट आंसर है तुम ऑप्शन ए नियुक्त आकार यहाँ तुम विसर्ग संधि ठीक अच्छे निम्नोक्त क्यों जोड़ी संधि विच्छेद भूल ठीक अच्छे भूल संधि विच्छेद कौटा है देवालय गिरीश नरेश महोत्सव करेक्ट आंसर है तुम ऑप्शन सी गिरीश गिरियुक्त ईश ये तुम भूल रही करेक्ट कौन हम तो निम्नोक्त क्यों जोड़ी संधि विच्छेद भूल अच्छी ए बी सी ना डी देखा गले ये तुम महोत्सव महायुक्त उत्सव ये तो ठीक अच्छे देवायुक्त देवयुक्त अलय आलय ठीक अच्छे यहाँ गिरीश तुम दीर्घ माने यहाँ तुम ठीक रही नरेश तुम नरयुक्त ईश ठीक रही माने ये तुम कौन भी ऑप्शन टा भूल ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बर्तमान 5टी संधि करले बर्तमान समास आहरी 5टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा पीताम्बर शब्दटी क्यों समासर उदाहरण कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि ना द्वंद्व तो पीताम्बर शब्दटी क्यों समासर उदाहरण कह तुम जानी जो तुम बहुब्रीहि समास होता है
बहुब्रीहि समास हेले तुमर कोन हेतै दुईटी शब्द स्वतंत्र शब्द मिसी गोटे न्यू शब्दटा सृष्टि करथांती जार गोटे अन्य मीनिंग ता हेता तो एठी तुमर पीतयुक्त अंबर हेकी पीतांबर हेची जार पूरा अर्थटी अलगा प्रकाश करछि सेति पे तुमर ऑप्शन सी टा एठी करेक्ट आंसर हो ठीक अछि नेक्स्ट देखो ओके त्रिभुवन रे केउ समास रहिछि ऑप्शन ए द्विगु अव्ययभाव कर्मधारय ना बहुब्रीहि एटा जानथिबो तुमे आर करेक्ट आंसर हेबो तुमर ऑप्शन ए द्विगु तो तुमर जति बेले त्रि किबा चतुर्भुज किबा एमति कोनोसी भी तुमर संख्या हिसाब रे आस्थाय तार से जगह तुमर द्विगु समास हेता ठीक अछि एटा तुम जानथिबो नेक्स्ट देखो राजांकर पुत्रर समस्त पद केउटी राजपुत्र राजपूत राजसूतन राजनंदन करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए राजपुत्र नेक्स्ट देखो दशाननर व्यास वाक्य ओके दशाननर व्यास वाक्य कोन हबो दशयुक्त आनन 10टी आनन जहार 10 आनन समाहार बा 10 आनन मध्य तो करेक्ट आंसर हबो तुमर ऑप्शन बी ठीक अछि 10टी आनन जहार आनन तुमर कोन नीलकंठ जदि शिवम को बुझाए तेबे एहा को समास हबो कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि ना द्वंद्व तो नीलकंठ तुमर जदि शिव को बुझाइले कोन हबो बहुब्रीहि से मु कहिसिली जदि से कोनोसी दुईटी स्वतंत्र शब्द मिसी कोनोसी अन्य अर्थटा प्रकाश करले संपूर्ण भाव से जगह तुमर बहुब्रीहि समास हेते ठीक अछि नेक्स्ट देखो अंबुज अंबुजु र प्रतिशब्द केउटी एटा तुमर प्रतिशब्द रो आसला पुनी देखो समास रो पांचटा क्वेश्चन करलो तुमर प्रतिशब्द रो पांचटा क्वेश्चन कमल मेघ सूर्य चंद्र करेक्ट आंसर हबो तुमर अंबुज रो कमल ठीक अछि नेक्स्ट मृगांक कहार प्रतिशब्द मृगांकर प्रतिशब्द सूर्य चंद्र हरिण पृथ्वी करेक्ट आंसर तुमरा चंद्र ओके तीन थर रेकर्डिंग करनी बट मोर जो माइक टा बंद थिला ठीक अछि किछि कहना आउ थरा हम रेकर्डिंग करबो प्रश्न पचारछि कुझटिकार अर्थ ठीक अछि कुझटिकार कोन अर्थ हो झड़ कुहुडी वर्षण मेघ गर्जन करेक्ट आंसर तुमरा ऑप्शन बी कुहुडी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शतक ऋतु कहार नाम इंद्र वरुण अग्नि जम करेक्ट आंसर तुमरा इंद्र नेक्स्ट देखो फटफट करबा बेसी समय न माने ओडिया और हमर रहिछि इंग्लिश रहिछि बहुत सारे पंकजर आखिर का अर्थ कोन पंकजर जात ठीक अछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो अभ्युदयर विपरीत शब्द वर्तमान विपरीत शब्द देखिए अभ्युदयर विपरीत कोन हबो अभ्युदयर अवनति नेक्स्ट देखो निर्विकार विपरीत शब्द निर्लिप्त विकारग्रस्त निष्क्रिय ना निर्मल निर्विकार विपरीत हबो तुमरा विकारग्रस्त ठीक अछि स्थूलर विपरीत स्थूल सूक्ष्म स्थूल गुण सूक्ष्म गुण जान दियो अनुरक्तर विपरीत हबो तुमरा अनुरक्तर आसक्त ना विरक्त अनुरक्तर तुमरा विरक्त हबो ठीक अछि साकारर विपरीत शब्द साकारर कोन हबो विपरीत साकारर तुमरा निराकार कपाल रे कर मारिबा वर्तमान एटा रूढ़ी लोकोक्ति जहा के हमर लास्ट टॉपिक तुमरा ओडिया का हमर ठीक अछि पांचटी क्वेश्चन एते रहबो कपाल रे कर मारिबा अर्थ कोन हबो ठीक अनुताप करबा ठीक थिबो जेते तुम किछि पश्चाताप करथिबो तुमरा कपाल रे हाथ बाजिबो ढोल भितर पोल रूढ़ीर अर्थ बहु चर्चित रूढ़ी बाहर को दृढ़ किंतु भितर दुर्बल अत्यंत शक्तिशाली मिछ कथा कहबा ना गुप्त रहस्य आनियो करेक्ट आंसर तुमरा बाहर को दृढ़ किंतु भितर दुर्बल नेक्स्ट अति लोभर तंती छिड़ी तो शिक्षा कोन रहिछि अति लोभ करे कोन हेतै करेक्ट आंसर तुमरा अत्यधिक लोभ क्षतिकारक जानथिबो लोकवाणी किंवा रूढ़ी तुमको जदि थरे भी रिविजन करछो ताले भलो भाबरे बुझिछो मन रहि जाइछि माने सफिशिएंट सेति पे तुम ठीक ठाक थरे माने अधिक जहा रहउछे तुम अधिक कवर करबा चेष्टा करबो जहा तुमर एही बली भाबरे क्वेश्चन देखिबा पाइबो बेसी किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको और ओडिया ग्रामर मिलिबोनी हला नाच न जानि कि अंगन वांक एटा तुम हिंदी रे बहुत अछि नाच ना जाना अंगन टेड़ा सर करेक्ट आंसर तुमरो निज दोष पई अन्य को दोष देबा ठीक अछि देखो लास्ट क्वेश्चन वीडियो लोकवाणी रो घरे नाही चाल बाट रे बाजे ढोलर भाव बढ़िया क्वेश्चन को घरे नाही चाल बाट रे बाजे ढोल निज समर्थ ठारू अधिक देखाइबा सफलता पई प्रचार करबा घर सम्मान रक्षा करबा किबा सत्य कथा प्रकाश करबा कोडा करेक्ट आंसर हेबा तुमरो निज सामर्थ्य ठारू अधिक देखाइबा तो एटा थिला तुमरो ओडिया ग्रामर 25 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थिला केमिति थिला क्वेश्चन तुम से भितर मध्ये कमेंट निश्चित गोटे जणाइबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो हमरो ग्रेट देखो नेक्स्ट हम देखिबा
कंप्यूटर रू 25 टी क्वेश्चन 5 टॉपिक रू सब देगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच मेमोरी हायरार्चिकली जनरली प्रोवाइड द लार्जेस्ट एक्सेस टू द सीपीयू ठीक है क्वेश्चन बुझी गलो हायरार्चिकली तो फास्टेस्ट एक्सेस सीपीयू के दे है तो मेमोरी सब रही करेक्ट आंसर कोन आबो करेक्ट आंसर आबो तमरो ऑप्शन बी रजिस्टर देन तमरो केस मेमोरी रैम आसीबो देन तमरो सेकेंडरी स्टोरेज ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 101101 तो डेसिमल इक्विवेलेंट कोन हो करेक्ट आंसर तमरो 45 व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रोम इज मोस्ट एक्यूरेट रोम को नेकी को स्टेटमेंट है तमरो एक्यूरेट इट इज ऑलवेज volatile it is used exclusively as case memory it retains data even when power is removed or option D right answer है तमरो option C it retains data even when power is removed ठीक अछि the primary purpose of an instruction register is to primary purpose of an instruction register is to what correct answer है तमरो store the instruction currently being executed ठीक अछि next देखो which of the following is not normally considered a characteristics of RISC or RISC architecture not normally considered correct answer है तमरो option B large number of complex addressing modes ठीक अछि BIOS and UEFI primarily perform which function during system startup तो startup रे तोरा function कोन रहते BIOS एवं UEFI रो सिस्टम रो कोन रहते initialize hardware and start the boot process ठीक अछि नेक्स्ट देखो a device driver is best described as device driver हम केमते describe करछो device driver तुम रहता है software that enable the operating system to communicate with hardware which is an example of open source operating system software open source operating system software कोडा करेक्ट आंसर तमरो लिनक्स ठीक अछि वर्चुअल मेमोरी प्राइमरीली यूजेस वर्चुअल मेमोरी कोन यूज करता है सेकेंडरी स्टोरेज टू एक्सटेंड एपरेंट मेन मेमोरी ठीक अछि बहुत बढ़िया which software translate high level language into machine code as a whole program right answer है तमरो compiler in excel which function counts cells satisfying a specified condition देखो एमएस ऑफिस रो हम क्वेश्चन करछु वर्तमान तो को फंक्शन ता तमरो करेक्ट आंसर हेता तमरो काउंट इफ ठीक है ए फंक्शन तुम लगेले हे परबो एक्सेल रो वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which excel reference remains fixed when copied to another cell right answer है तमरो ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट देखो in ms word control plus shift plus hyphen generally এটা কোন হচ্ছে তোমার এমতি করলে তোমার ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ ঠিক আছে দেন তোমার কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস তোমার গ্রেটার দেন এটা তোমার হইতায় ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ নেক্সট দেখো which excel function searches the first column of a table and return a corresponding value from another column excel function right answer है तुम्हारा VLOOKUP which feature in PowerPoint controls the overall design and formatting of slide right answer है तुम्हारा option B slide master which protocol is responsible for reliable connection oriented transport right answer है तुम्हारा TCP next देखो which layer of the OSI model is responsible for routing pockets right answer है तुम्हारा network next देखो which DNS record maps the domain name to an IPv4 address DNS record map तुम्हारा A next देखो which device primarily operate at layer 2 of the OSI model right answer है तुम्हारा switch IPv6 addresses are केते बिट रो IPv6 right answer है तुम्हारा 128 बिट रो ठीक अछि ए साइबर अटैक साइबर सिक्योरिटी वर्तमान
देखिए 5टी क्वेश्चन लास्ट 5टी क्वेश्चन ठीक अच्छे बर्तमान लास्ट आम जीएस रु 25टी क्वेश्चन देखो A cyber attack that overwhelm a service by sending massive traffic from many compromised system is called हम कौन कहते हैं ताको राइट आंसर बताओ DDoS ठीक है which cryptographic approaches uses the same key for encryption and decryption करेक्ट आंसर बताओ symmetric encryption a digital signature primarily provides digital signature कौन primarily provide करता है authentication integrity and non repudiation which attempts to inject malicious SQL statement into an application's database query. আর correct answer তোমার SQL injection ঠিক আছে next এবং last question computer next আমরা GS র question দেখব hashing differs from encryption because hashing is generally hashing কোন hashing কেমিতি তোমার encryption র difference right answer তোমার a one way transformation ঠিক আছে এটা তাহলে তোমার কম্পিউটার 25টি ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন इंग्लिश ग्रामर टेंस रे देखिबा नो सुनर डेस्क द अनाउंसमेंट देन द क्राउड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द गेट कोन है भीतर टेंस रे देखो ही मेड हैड मेड ना डिड ही मेड करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन बी हैड ही मेड नो सुनर हैड ही मेड द अनाउंसमेंट देन द क्राउड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द गेट अर्थ होची देखो एटी तुमरे एटी तुम रूल ऑफ इनवर्जन लगी रूल ऑफ इनवर्जन कौन थाए तुम जो हेल्पिंग वर्बटा थाए से तुम सब्जेक्ट रु आगे लगी थाए ठीक अच्छे तो तुम ऑप्शन पी ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख इफ द अथॉरिटीज टेक्स द वार्निंग अर्लियर द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड ये कौन है एक्टेड ओपन हैड एक्टेड ओपन वुड एक्ट ओपन और तुम हैव एक्टेड ओपन कौन है करेक्ट आंसर ये तुम ए हैड एक्टेड ओपन तार अर्थ कौन रही सो देख ये प्रश्न तुम गोटे रही पास्ट टेन्स गोटे हाइपोथेटिकल पास्ट टेन्स जहाँकि तुम से समय गोटे क्वेश्चन एवं तार रिजल्ट को देखा माने जदि से एक्ट करें से एक्सीडेंट को एवॉइड कर तो ये जगह तुम कौन होता है हैड एक्टेड ओपन ठीक अच्छे जदि से तार जो वार्निंग थिला से मानी था एक्सीडेंट को तुम एवॉइड कर पारि था नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बाय नेक्स्ट मार्च सी टेक्स इन द डिपार्टमेंट फॉर 10 years will work will have worked will have been working or has been working could have by next march correct answer तुम रेडी will have been working by next march she will have been working in the department for 10 years तो 10 वर्ष हो से काम कर नेक्स्ट देख आई विश आई टेक्स्ट द आंसर व्हेन द एग्जामिनर आस्क मी पचारि कौन आई विश आई नो द आंसर व्हेन द एग्जामिनर आस्क मी न्यू हैड नोन और हैव नोन करेक्ट आंसर है तुम हैड नोन आई विश विश करेगी एग्जामिनर मत पचार प्रश्न आगु जानी था देखो ये तो कौन है नो तुम प्रेजेंटेंस रही न्यू तुम सिंपल फर्स्ट रही बट न्यू कहीं यूज है कहीं ये आई विश लगी आई विश माने से बर्तमान रिग्रेट कर मत जो प्रश्न पचारगला मुझे समय आंसर जानी था काश जानी था तो एमती समय तुम कौन हम हैड नोन लगे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख hardly takes the meeting began when the electricity failed had has did or was could have correct answer है तुम्हारा had hardly had the meeting began when the electricity failed so जितने तुम hardly कि तुम scarcely कि तुम barely एमती वर्ड लगी थाए से तुम स्ट्रक्चर केमी होता है देख हेड लगे कारण ये तुम द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड मान तुम यहाँ अच्छे तुम पास्ट टेन्स अच्छे से तुम फर्स्ट टेन्स लगे ठीक अच्छे आउ तुम हार्डली स्कैर्सली बैडली लगे तार स्ट्रक्चर हम तुम हार्डली प्लस तुम जहाँ तुम रही टेन्स हेड देन तुम आसो कौन सब्जेक्ट देन तुम आसो एटार V3 फॉर्म ठीक अच्छे बिगिन विगन ठीक से
नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो बर्तमान आर्टिकल्स एवं प्रिपोजिशंस जो हम देखियो So article first question अछि he is Dex European scholar with Dex unusual command of Sanskrit कौन होगा A B C D A এবং an तब आर्टिकल व्यवहार करियो राइट आंसर है तुम्हारा he is a European scholar with an unusual command of Sanskrit ठीक है नेक्स्ट देखो he has little regard that's the opinions of others he has little regards that's the opinion of others कौन होगा to for with or on करेक्ट प्रिपोजिशन यूज करो एपर তোমার প্রিপোজিশন র দুইটা না তিনটা কোশ্চেন দেখো তো নিশ্চয় মিলবে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন র টোটাল 3 টু 4টা কোশ্চেন নিশ্চয় আসছে ঠিক আছে কয়টা হবে তোমার ফর হি হ্যাজ লিটল রিগার্ড ফর দ্য অপিনিয়ন অফ আদার্স রিগার্ড লাগে তোমার ফর নিশ্চয় আসবে the officials acted that's accordance with the rules in accordance on accordance at accordance or by accordance accordance পূর্ব কোন হতে তোমার কারেন্ট आंसर হবে in accordance with the rule ঠিক আছে নেক্সট দেখো tax knowledge of law is essential for tax police officer তো নলেজ দেখো এই হবে কেবল আন হবো কোড হবো তো কারেক্ট आंसर হবে তোমার নো আর্টিকেল ফার্স্ট রে তোমার কোন সে আর্টিকেল লাগেনি বাট পুলিশ আগে তোমার এ পুলিশ অফিসার লাগে নলেজ অফ ল ইজ এসেনশিয়াল ফর এ পুলিশ অফিসার ঠিক আছে অপশন বি তোমার কারেক্ট आंसर he has been working here tax 2018 and has been responsible tax this section since then कौन होगा he has been working here ফর্ম হবো সিন্স হবো কোটা হবো তো এটা হবে তোমার সিন্স ঠিক আছে সিন্স মানে 2018 এবং and has been responsible for this section since then তো সেই সময়টো ଏ ଯାଏ ତମର ଏହି ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସାଇଡରେ ତମର ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାରେକ୍ ପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏତେ ସାର ରହୁଛି ସେଇଟା ତମେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କାହିଁକିନା ତମେ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ୟାରେକ୍ ହିଁ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର people believes that he is an honest officer choose the best passive form तो यार तुम्हारा passive form बाजार अछि passive form कौन हो A B C ना D निजे ऑप्शन देखि दियो करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन A people believe that he is an honest officer रो passive बाजार he is believed to be an honest officer ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन do not let anyone enter the room यार पर वॉइस कौन हो चेंज कर ले let the room not be entered by anyone let anyone not enter the room कौन होगा करेक्ट आंसर है तुम्हारा let the room not be entered by anyone do not let anyone enter the room रो तुम्हारा वॉइस चेंज कर ले who can solve this problem यार करेक्ट आंसर कोड़ा हो जो स्कोर निश्चित शेयर करियो द करेक्ट आंसर हो by whom can this problem be solved ठीक अछि আর রুলস তুমি জানতে যদি জানি না তাহলে আই বল বাবা তোমার রানী ম্যাম বা তোমার নীতু ম্যাম পাবো ইংলিশ গ্রামার ভয়েস সেকশনটা বুঝি নেব ঠিক আছে the committee will have considered the proposal by Monday আর ভয়েস চেঞ্জ করে তোমার করেক্ট आंसर হবে the proposal will have been considered by the committee by Monday का by Monday ही ରହିବ ठीक আছে someone has stolen my documents କେହି ଜଣେ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୋରି କଲେ ନେଇଛି ତାହାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେବ ତମର my document have been stolen ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତମର ଭଏସ୍ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଅବିଡିରେଟ୍ ସିନୋନିମ୍ସ ପଚାରିଛି ମାନେ ସିମିଲାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଷ୍ଟବନ୍ ଜେନେରସ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ करेक्ट आंसर है तुम्हारा स्टबन माने तुम्हार जिद्दी ठीक है नेक्स्ट देखो एंटोनिम पचे तुम्हारा एफेमराल रो एंटोनिम्स टेम्पररी फ्लीटिंग परमानेंट ट्रांजिएंट करेक्ट आंसर है तुम्हारा परमानेंट ठीक है एफेमराल रो एंटोनिम्स परमानेंट नेक्स्ट यूबिक्यूटस रो कौन मीनिंग करेक्ट आंसर तुम्हारा प्रेजेंट एवरीवेयर ठीक है नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ पर्निशियस सिमिलर वाला पर्निशियस रो
କ'ଣ ବେନିଫିସିଆଲ, ହାର୍ମଫୁଲ୍, ଅର୍ଡିନାରୀ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ହାର୍ମଫୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। Antonym of candid in the sense of frank, honest, direct, evasive or sincere. Right answer of tomorrow evasive. Next देखो, एटा में सरिला tomorrow voice को बर्तमान tomorrow हमें लास्ट टॉपिक एरर डिटेक्शन को देखा। बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन नहीं थी। नेक्स्ट आउ एपरी मॉक जब चाहूछ ताली तुम कमेंट सेक्शन जणे हम निश्चित नेक्स्ट ईयर तुमर यहीपटी मॉक आनिक आसो। Neither the officer nor his assistant was willing to accept the responsibility. एतिरे फुल कोड अछि। Neither the officer nor his assistant was willing to accept the करेक्ट आंसर तुमरो was। एतिरे तुमरो was हेबो। सो देखो एतिरे तुमरो was तुमरो एरर हेबा कारण कोन होछि जेते पर तुमरो neither nor रो एमती प्रश्न आस्था है एपरी सेंटेंस में तुम देखिबो जो तुमरो वर्ब को लागि अछि वर्ब नियरेस्ट तुमरो सब्जेक्ट हिसाब रे तुमरो वर्बटा यूज होते। तो एतिर तुमरो प्लुरल फॉर्म अछि एसिस्टेंस सेति में तुमरो वाज जगह रे वेयर यूज हेबो कथा। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो, the number of applicants have increased considerably this year. The number of applicants have considerably कोडा करेक्ट आंसर। एरर पार्ट तुमरो रहिछि हैव रे काहे कि देखो काहे कि एथिरे तुमरो हैव हेबनी हैज हेबो कहीं ये तुम द नंबर ऑफ लगे द नंबर ऑफ जिते बेले लगे से तुम सिंगुलर हिसाब से व्यवहार है। ठीक अच्छे तुम हैव जगह सब बेले हैव गोटे प्लुराल फॉर्म आ तुम से जगह तुम हैज व्यवहार कर। ठीक अच्छे नंबर ऑफ लग गल ना अलरेडी से तुम हैव जगह हैज व्यवहार कर। नेक्स्ट ही इज वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हु हैज ऑलवेज परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑनेस्टली। He is one of those officers who has always performed his duty honestly. One officer has honestly कोटा तुम्हारा भूल रही है को पार्ट करेक्ट आंसर है तुम्हारा हैज जे तुम्हारा हैज व्यवहार है कौन व्यवहार है देखो ये तुम्हारा हैज व्यवहार है तुम्हारा हैव कहीं ऑफिसर तुम्हारा प्लुरल रही है से तुम्हारा हैज जगह तुम्हारा ये हैव व्यवहार है। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो, no sooner did he reach the station when the train departed. No sooner did he reach the station when the train departed. देखो तुम्हारा no sooner एटा गोटे तुम्हारा एडवर्बियल फ्रेजेस जो तुम सब बेले देन व्यवहार होते ना कि तुम्हारा when। ये तुम्हारा रॉन्ग रही when जगह तुम्हारा कौन हम देन व्यवहार हम। ठीक अच्छे no sooner did he reach the station then the train departed এটা তোমার গোটে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস। ঠিক আছে নো সুনর সহিত सबବେଳେ তোমার দেন র ব্যবহার হইতা। নেক্সট क्वेश्चन দেখো, the principal along with the teachers were present at the ceremony। এতে কোন জায়গায় ভুল রয়েছে তোমার দেখো এই সেন্টেন্সে তোমার দ প্রিন্সিপাল যে রয়েছে এটা তোমার ট্রু সিঙ্গুলার সেন্টেন্স। तो प्रिंसिपल तुम गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ सहित एलंग विथ लगी टुगेदर विथ कि एकम्पानिड बाय तो यही जगह तुम टीचर्स प्लुराल फॉर्म हेले तुम सेंटेंसटा को तुम सिंगुलर हिसाब से ही जेहेतु तुम मेनटा ये रही है द प्रिंसिपल एपाई तुम वेल व्यवहार हेनी। ठीक अच्छे ये तुम वाज व्यवहार हम। ठीक अच्छे तो भूल तुम रही ऑप्शन सी रे। नेक्स्ट देखो, तो ये तुम इंग्लिश सेक्शनटा कंप्लीट होगा बर्तमान आम कंप्यूटर देखा। ठीक अच्छे तो जहाँ था इंग्लिश में तुम जब किसी डाउट रही है तुम निश्चित कमेंट मत पचार और यहीपर जब तुम क्वेश्चन चाहूँ ताहले आम आणिकी आसवा। व्हिच मेमोरी हायरार्की जनरली प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू द सीपीयू। ओके ये चूज कर बर्तमान कौन एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखो करेक्ट आंसर तुम मेमोरी जनरली प्रोवाइड फास्टेस्ट फर्स्ट तुम रजिस्टर देन तुम केस देन रैम देन सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी।
101101 बाइनरी कौन हो डेसिमल है तुम्हारा 45 नेक्स्ट which statement about whom is most accurate हमें जीएस रू देखिबा जोतरे हमें इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कवर करबा फर्स्ट क्वेश्चन which of the following fundamental rights is available to both citizens and foreigners except animal aliens एते मध्ये को फंडामेंटल राइट था तुम्हारा सिटीजन्स एवं तुम्हारा फॉरेनर ପାଇଁ ତ अप्रूव अछि बट एलियंस ପାଇଁ नाही किबा एनिमल ପାଇଁ राइट आंसर पर हमरो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ठीक है नेक्स्ट देखो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 13 32 and 226 which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 years that जानती हो को amendment 61 first amendment the principle of collective responsibility of the union council of ministers is explicitly mentioned in कितने नंबर आर्टिकल मेंशन अछि करेक्ट आंसर तुम्हारा आर्टिकल 75 which of the following is not a constitutional body कोडा constitutional body नोहे राइट आंसर तुम्हारा नीति आयोग ठीक है which are upon side is particularly associated with the doc वर्तमान हिस्ट्री रू इंडियन हिस्ट्री रू पांचटी क्वेश्चन रहबो देखो डॉक्यूमेंट को थिला राइट आंसर तुम्हारा लोथार ठीक है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एन इंपोर्टेंट सोर्सेस फॉर द राइनो कहा समय रे तुमरा अलाहाबाद पिलर ओडे पिलर इंस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट सोर्स थिला बोलो को राइन कहा समय रो अलाहाबाद पिलर ओडे इंपोर्टेंट सोर्स थिला राइट आंसर तुमरा समुद्रगुप्त द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल वाज इंट्रोड्यूस्ड कहा अंडर द इंट्रोड्यूस थिला तुमरा परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस Which movement was launched by Mahatma Gandhi after Jallianwala Bagh massacre and Khilafat issue? Correct answer for tomorrow non-cooperation movement. Cabinet missions came to India in year day. Correct answer 1946. Which dynasty is particularly associated with the construction of the Jagannath temple at Puri in its present form? Right answer Eastern Ganga. Next देखो the Hathigumpa inscription is associated with Hathigumpa कहाँ रहितो associate कहाँ रहितो who founded the Gajapati dynasty of Odisha ओडिशा रे गजपति डायनेस्टी किए खोजिथिला वो फाउंडर किए राइट आंसर कपिलेंद्र देव Piker rebellion of 1817 was primarily directed against कहाँ against पाइकर रेबेलियन हेतिला करेक्ट आंसर तुम्हारा ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन देखो 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट हमर 10 क्वेश्चन रहला ओके उत्कल सम्मेलन प्ले ए मेजर रोल इन एंड तुम्हारा ओडिशा हिस्ट्री उत्कल सम्मेलन फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटेड ओडिशा प्रोविंस ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस कौन एक्सपीरियंस करता है करेक्ट आंसर तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जदि कांस्टेंट गोटे स्पीड रे सर्कुलर पाथ रे गोटे बॉडी टा मूव करि ताल से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टा एक्सपीरियंस करिवो व्हिच प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन फील्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली एक्सेलरेट फॉरवर्ड को लॉ हिसाब रे रहते करेक्ट आंसर तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अमंग द three common types of nuclear radiations which of the following is the highest penetrating power from the three common types of nuclear radiation right answer है तुम्हारा गामा ठीक है गामा ऊपर सबसे अधिक हमारा रेडिएशन तो रहता है the hormones primarily responsible for lowering blood glucose level is कोड़ा हमारा को हार्मोन टा responsible lowering blood glucose level राइट आंसर तुम्हारा इंसुलिन ठीक है जहाँ तुम्हारा इंसुलिन लो कौन हम डायबिटीज ठीक है व्हिच फेनोमेनन इज मेनली रेस्पोंसिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द डे टाइम स्काई एटा कहा माने स्काई ब्लू देखे जिबार कारण पर कौन पाई ए तुम्हारा रहता है स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ
which river is known as the Sora of Odisha? Odisha তো Sora of Odisha কোন river? রাইট অ্যান্সার তোমরা মহানদী। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো দেওমালি পিক, the highest mountain peak of Odisha is located in, এটা তোমরা রয়েছে কোরাপুটরে। which of the following pairs is incorrect? ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭିତରକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସାତକୋଶିଆ ମହାନଦୀ ନା ଚିଲିକା ବାଲେଶ୍ୱର? ଅପସନ୍ ଡି, ଚିଲିକା କୋଉଠି ଅଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫେମସ୍ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଇଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ତମର ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଟ୍ରାଡିସନ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତମର which mineral is Odisha particularly famous for being one of India's major producers? If you know the answer, then comment below. For such videos, please like, share and subscribe. ঠিক আছে, ସିଓର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆସିବ ଯଦି ତମେ ଭଲ କି এই ଭିଡ଼ିଓରେ 500 ଲାଇକ୍ କ୍ରସ୍ କରିଦେଉଛ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା ଜିକେ ଜିଏସ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଏବଂ ସେକ୍ସନାଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦରକାର ମ୍ୟାଥ୍ କିମ୍ବା ରିଜନିଂରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।